બનશે। નાણાપ્રધાન નિર્મલા સીતારમણે ગુરુવારે સવારે 11 વાગે સંસદમાં નાણાકીય વર્ષ 2024-25 માટે વચગાળાનું બજેટ રજૂ કર્યું। ચૂંટણી પહેલા રજૂ થનાર મોદી સરકારના વર્તમાન કાર્યકાળનું આ છેલ્લું બજેટ હતું। નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે લગભગ 1 કલાક બજેટ પર ભાષણ આપ્યું હતું। લોકોને બજેટ પાસેથી ઘણી અપેક્ષાઓ હતી। બજેટને લઈને દેશભરના નેતાઓની પ્રતિક્રિયાઓ પણ સામે આવી રહી છે। વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું કે વિકસિત ભારતનું બજેટ સમાજના દરેક વર્ગને લાભ આપશે અને વિકસિત ભારતનો પાયો નાખશે। બજેટ પર પ્રતિક્રિયા આપતા પીએમ મોદીએ કહ્યું કે આ દેશનું ભવિષ્ય ઘડવાનું બજેટ છે। આ વિકસિત ભારત માટે સમર્પિત બજેટ છે। આ બજેટ યુવા ભારતની યુવા આકાંક્ષાઓને પ્રતિબિંબિત કરે છે। આ એક મજબૂત ભવિષ્યની ગેરંટી છે। સમાજવાદી પાર્ટીના અધ્યક્ષ અખિલેશ યાદવે ગુરુવારે સંસદમાં કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ દ્વારા રજૂ કરાયેલ વચગાળાના બજેટને ભારતીય જનતા પાર્ટીનું વિદાય બજેટ ગણાવ્યું। વધુમાં તેમણે કહ્યું કે ભાજપ સરકારે જન વિરોધી બજેટનું 1 દાયકા પૂર્ણ કરીને એક શરમજનક રેકોર્ડ બનાવ્યો છે, જે ફરી ક્યારેય તૂટશે નહીં, કારણ કે હવે સકારાત્મક સરકાર આવવાનો સમય છે। આ ભાજપનું વિદાય બજેટ છે। ગૃહપ્રધાન અમિત શાહે ગુરુવારે જણાવ્યું કે 2024-25નું વચગાળાનું બજેટ 2047 સુધીમાં વિકસિત ભારત બનાવવા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના વિઝનને સાકાર કરવા માટે રોડમેપ રજૂ કરવા જઈ રહ્યું છે। શાહે એમ પણ કહ્યું કે નાણામંત્રીનું બજેટ ભાષણ ભારતને દરેક ક્ષેત્રમાં અગ્રેસર બનાવવાની યાત્રામાં છેલ્લા 10 વર્ષમાં મોદી સરકાર દ્વારા કરવામાં આવેલી સિદ્ધિઓને દર્શાવે છે। This is an interim budget, as you know, and this is certainly our Honorable Finance Minister has done an excellent job in summarizing what has happened and how India has transformed in the last 10 years. From a fragile 5 economy that was a situation in 2014, we are today the top 5 economies of the world. We are the fastest growing economy in the fastest growing major economy in the world. And it is clear today that India is on a launch pad to become a developed nation in our lifetime. So this has been an excellent summary, the interim budget, of what the qualitative and quantitative transformation of the Indian economy has gone through in the last 10 years. But the opposition criticized this particular budget. No, the opposition will obviously criticize it. What else can they do? They certainly can't admire our performance. The opposition's job is to criticize, and they'll continue to criticize even when they lose the next election. Sir, do you think that this budget is touch every common person? Look, the last 10 years, the Prime Minister Narendra Modi ji's policies, his governance, his corruption-free governance, his use of technology in governance has ensured that every person, every Indian has been touched by the government and governance through various schemes and through the determination to make sure nobody is left behind. So Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas has played out not just as a slogan, as a real governance ideology and a governance theme. मेरे हिसाब से इस साल भी बहुत ही ज़्यादा निराशापूर्वक ये बजट रहा है। देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पे है, पर इस बजट में कुछ भी नहीं बताया गया कि सरकार क्या कदम उठाएगी जिससे कि महंगाई और बेरोजगारी से लड़ा जा सके। जेंडर बजट हर साल 5% के अराउंड होता है। हम महिलाएं देश में 50% हैं, फिर भी जेंडर बजट सिर्फ 5% के अराउंड होता है। आज महिलाएं वर्क फोर्स में सिर्फ 23% हैं। सिर्फ 10% स्टार्टअप्स महिलाएं ओन कर रही हैं। सिर्फ 20% MSMEs महिलाएं ओन करती हैं। तो बजट में क्यों नहीं इस बारे में बात करी गई कि किस तरीके से महिलाओं को वर्क फोर्स में ज्यादा पार्टिसिपेशन करने का मौका दिया जाएगा। हम ये देखते हैं कि महिला सुरक्षा पे वही घिसी-पिटी स्कीमें बार बार आ जाती हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। अरे सिर्फ नारेबाजी से थोड़ी ना बेटियां बचेंगी, बेटियां पढ़ेंगी। क्यों नहीं इस बार बजट में बताया गया कि हर डिस्ट्रिक्ट में किस तरीके से फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे, पुलिस के संसाधन, पुलिस की जवाबदेही किस तरीके से बढ़ाई जाएगी। आज अगर आप दिल्ली पुलिस को भी देखें तो सिर्फ 11.75% महिला पुलिस फोर्स में है। तो कैसे ये नंबर बढ़ाया जाएगा? क्यों स्वास्थ्य के बारे में, क्यों एजुकेशन के बारे में और बात नहीं करी? तो मेरे हिसाब से एक आम इंसान के लिए ये बहुत ही ज़्यादा निराशापूर्वक बजट रहा है और मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ। आज बजट भी पेश किया गया है सर। आज का बजट जो है इंटरिम बजट था, लेकिन जो भाषण वित्त मंत्री महोदय ने दिया वो एक चुनावी भाषण लगा मुझे, एक इलेक्शन स्पीच लगा। और अपनी सरकार का गुणगान ही करना है वो तो हर
सभा में नेता भाजपा के करते ही हैं, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि अंतरिम बजट में भी कुछ ऐसे कदम ले सकते थे जिसमें लोगों को राहत मिलती। ना तो उसमें महंगाई को कम करने के उपाय बताए गए हैं, ना रोजगार पर को ध्यान केंद्रित किया गया है। ले देकर सिर्फ अपना गुणगान किया है, अपनी पीठ थपथपाई है, और इस पूरे भाषण में कुछ ऐसा नया निकल कर नहीं आया जिससे जनता को कुछ उम्मीद जग सकती है। और मैं जानता हूं कि बजट इंटरिम था, और जिस तरह सरकार कह रही है कि अगला बजट हम बाद में पेश करेंगे, उससे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अति आत्मविश्वास दिखता है, ओवर कॉन्फिडेंस दिखता है। लेकिन ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी थी सरकार के पास, वित्त मंत्री जी के पास, कि वो कहीं ना कहीं किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए कोई राहत नहीं दी गई है। और जब आप कहते हैं कि अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी चल रही है, तो जो लोग मेहनतकश लोग हैं, खासकर जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, मिडिल क्लासेस हैं, स्टूडेंट्स हैं, फार्मर्स हैं, उनके लिए कहीं कोई राहत, कोई हेल्प, कोई आर्थिक मदद देने का प्रावधान इस बजट में मुझे दिखा नहीं। जैसा मैंने कहा, अधिकांश बजट सिर्फ अपना गुणगान किया, अपने कार्यकाल की सफलताओं को किया। जैसे राष्ट्रपति महोदय का जो भाषण था, उसको भी एक पॉलिटिकल भाषण की तरह इस्तेमाल किया। आज का जो इंटरिम भाषण स्पीच थी, वो भी देखिए पॉलिटिकल थी, और पूरी तरह चुनावों को लेकर वो भाषण दिया गया था। अन्य खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खबरों का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं।